Welcome to VLearn. This is session 9 of Human Computer Interface. So in today's session, we are going to discuss about the guidelines for choosing colors for web pages. After that, we are going to discuss about user system interaction. After that, we are going to discuss straight transition diagram, then goal operation method selection. After that, we are going to discuss pointing devices, then the elements of user interface, then user interface design, user interface. After that, we are going to discuss GUI and its advantages. After covering the advantages of GUI, we are going to discuss about the user-centered design, and at last, we are going to discuss the user interface design process and principle. So let us start today's session with the topic, that is guidelines for choosing colors for web pages. So basically here are the guidelines according to which we can choose our colors so as to minimize the wastage of time for the downloading of websites and all. So here are the points. Always minimize the number of presented colors for faster downloading. So डाउनलोडिंग को फास्ट करने के लिए, किसी भी वेबसाइट की डाउनलोडिंग को फास्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वी हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन. देन ऑलवेज कंसीडर कलर इन कॉन्टेक्स्ट, नेवर इन आइसोलेशन. Similarly, the third point here is use similar or same color schemes throughout a website. In a whole website, we have to choose a same format, same color scheme so that it represents a data in a proper manner. Now the next point here is foreground colors should be a different as possible from background colors. जो हमारे foreground colors हैं वो different होने चाहिए background color से, so that जो भी हमने डेटा उसमें write किया है, जो भी हमने डेटा store किया है वो easily visible हो. Similarly, the next point is the most recommended foreground text color is black, presented on a light colored background of low intensity. Basically जो हमारा टेक्स्ट कलर होता है वो जनरली प्रेफर किया जाता है कि ब्लैक हो, एंड रिलेटेड टू दिस द बैकग्राउंड शुड बी ऑफ लाइट कलर्ड. नाउ the next point here is use dark background when establishing contrast between an area of the screen and the main screen body. Background हमें तभी contrast यूज करना चाहिए जब हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है स्क्रीन और मेन बॉडी के बीच में. सिमिलरली हाई इंटेंसिटी कलर्स आर बैकग्राउंड सच एज रेड, मैजेंटा एंड ब्राइट ग्रीन मस्ट बी अवॉइडेड. The colors which we have discussed here, that is red, magenta and bright green, we must avoid these colors as background. Now when choosing foreground and background colors, ensures that contrasting combinations are selected. जब भी हमें foreground या background colors choose करने होते हैं किसी भी particular website से related या particular document से related, तो हमें इस way में choose करना चाहिए कि एक proper combination setup हो, mix up ना हो coloring between foreground and background. Now the next point here is use a uniform color in large screen areas. That means you have to use a same combination of colors throughout the website. Now the next point is large areas of the same color download faster. That means किसी भी एक particular website में जो same area होगा, अगर हमने वो सेम बैकग्राउंड कलर से फिल किया है, सेम फोर कलर से फिल किया है, तो वो फास्टर डाउनलोड होगा इन कंपैरिजन टू द डिफरेंट कलर्स. सो फॉर स्मॉलर एलिमेंट द मोर कॉन्ट्रास्ट इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली जहां पर स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, स्मॉलर डेटा है, वहां पर हमें कॉन्ट्रास्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है. एंड यूज फ्लैट वेब सेफ कलर्स. And similarly at last here, select colors that can be easily reproduced in black and white. We have to use the colors which can easily be represented in black and white combination. Now the next topic here is user system interaction. So here basically we are mentioning the points through which a user can interact with the system. So here are the notations to specify interaction. Now here first one is STD, that is state
transition diagrams. Then the next one is PN, that is Petri nets. Then GOMS, and it is also known as goal operation methods selections. Then the last one is UAN, that is user action notation. Now let us discuss about the STD, or we can call it state transition diagram. So basically, state transition diagram is a diagram which shows the various states through which a system goes during its life cycle. So as you can see here, STD is a set of nodes that represent system states and set of links between nodes that represent possible. So यहाँ पर जो STD डायग्राम है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, वो शो करता है डिफरेंट स्टेट्स को थ्रू विच अ सिस्टम गोज. उन स्टेट्स को ये शो करता है जिसके थ्रू एक सिस्टम पास आउट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. नाउ हियर द नेक्स्ट वन इज पेरी नेट्स. So basically it is a diagrammatic tool to model concurrency and synchronization in distributed systems. एक concurrency का approach follow करने के लिए, synchronize करने के लिए different systems को, ये एक diagrammatic tool है जो हम use कर सकते हैं. Similarly, Perry nets are visual communication aid to model the system behavior and it is based on strong mathematical foundation. ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन के लिए टेक्निक है जिसके थ्रू हम सिस्टम बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ डायग्रामेटिकल मैनर. नाउ द नेक्स्ट वन हियर इज GOMS, दैट इज गोल ऑपरेशन मेथड सिलेक्शन. सो GOM इज फैमिली ऑफ यूजर इंटरफेस मॉडलिंग टेक्निक. हियर गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स आर इनपुट फॉर दिस अप्रोच. गोल्स या फिर हम ऑपरेटर्स की बात करें या मेथड्स या सिलेक्शंस की बात करें, ये यहाँ पर एज अ इनपुट वर्क करते हैं, क्योंकि हम कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, कोई भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे, वो एज अ इंटरफेस वर्क करेगा, एज अ यूजर इंटरफेस ट्रीट किया जाता है. सो दिस अप्रोच इज यूज्ड various qualitative and quantitative measures which have useful approximations. Now here the last one is UAN. Basically it is neutral about the user and interface technology. इसका कॉम्बिनेशन इंटरफेस या टेक्नोलॉजी से नहीं होता है, हम यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी इंटरफेस यूज कर सकते हैं. सो इट एम्स टू शो हाउ tasks match computer devices. That means different tasks, how we can connect these tasks to computer devices and carry out our operations. Now the last one here is the elements of UAN are symbols, operators, conditions and options, then tables of user action, feedback and system actions, or state and temporal relations and constants. So all these are the elements of UAN. Now let us discuss about the various pointing devices. Now here the first one is direct control pointing device. Under this category we have two devices. First one is light pen and the next one is touch screen. Similarly in the other categories, that is indirect pointing devices, we have mouse, trackball, joystick, graphics tablet and touchpad. So all these are the pointing devices through which we can point a particular object on our screen. Either it can be the screen of your desktop, laptop or a mobile. Now let us discuss the elements of the user interfaces. So to perform user interface analysis, the practitioner needs to study and understand four elements. So here are the elements. First one is the users who will interact with the system through the interface. पहला जो यूजर है जो इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम से, उससे रिलेटेड होता है. Then the tasks that end users must perform to do their work. Then the second one is related to the tasks which are performed by the end users. Then the third one is related to the content that is presented as part of the interface. Then comes the last one, that is the work environment in which these tasks will be conducted. So the last one represents the environment in which you are going to perform your task. Then comes the
Next topic, that is user interface design means. So basically designing effective interfaces for software system. It has only one motive. So let us discuss the user interfaces. So system users often judge a system by its interface rather than its फंक्शनैलिटी. जो भी सिस्टम के यूजर्स होते हैं वो किसी भी सिस्टम को उसके इंटरफेस से जज करते हैं rather than its फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी के बेसिस पर कम जज किया जाता है, whereas इंटरफेस के बेसिस पर ज्यादा जज किया जाता है. Then next point is a poorly designed interface can cause a user to make catastrophic errors. कोई भी जो ऐसा डिजाइन है जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, यूजर के लिए कह सकते हैं हेल्पफुल नहीं है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है, वहां पर यूजर्स एरर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो इट इज बेसिकली यू कैन से अ टाइप ऑफ डिजाइन विच यू मस्ट अवॉइड. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पुअर यूजर इंटरफेस डिजाइन इज द रीजन व्हाई सो मेनी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर नेवर यूज्ड. बेसिकली हम देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बट only one or two we are using because the others are not having proper interface design. Now let us discuss the next topic, that is graphical user interfaces. So most users of business systems interact with these systems through graphical interfaces, although in some cases legacy text based interfaces are still used. Basically graphical based इंटरफेस की अगर हम बात करें, आज के टाइम पर हम जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उनमें हम ग्राफिकल व्यूज का यूज करते हैं, ग्राफिकल नोटेशंस का यूज करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं, आइकन्स होते हैं हमारे पास, तो हम उन्हीं आइकन्स के थ्रू अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. नाउ हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नाउ द फर्स्ट वन हियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स. विंडोज, देन basically multiple windows allow different information to be displayed simultaneously on the user's screen. अगर हम विंडोज की बात करें तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज ओपन कर सकते हैं. देन कम्स द आइकन्स. सो आइकन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सम सिस्टम्स आइकन रिप्रेजेंट फाइल्स, ऑन अदर्स icons represent processes. So there are various types of icons. Some icons represent the processes, some icons represents the files. Similarly, there are menus as well. Menus are commands which are selected from a menu rather than typed in a command language. Similarly, pointing. So a pointing device such as mouse is used for selecting choices from a menu or indicating items of इंटरेस्ट विंडो. सो पॉइंटिंग डिवाइसेस की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को पॉइंट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं. नाउ द लास्ट वन हियर इज ग्राफिक्स. सो ग्राफिकल एलिमेंट्स कैन बी मिक्स्ड विद द सेम डिस्प्ले. नाउ हियर आर द एडवांटेजेस ऑफ द GUI. सो दे आर easy to learn and use. The most, you can say, the basic advantage or the most important advantage of GUI is that it is easy to learn and use. Users without any experience can easily learn it, can very quickly learn it and use it. Now the next point here is the user may switch quickly from one task to another and can interact with several different applications. Here the main advantage of GUI is that you can switch to n number of applications at the same time. Then the last one here is fast, that is full screen interaction is possible with immediate access to anywhere on the screen. That means you can easily access any element which is available on your screen. Now the next topic here is user-centered design. So the aim is to sensitize software engineers to key issues underlying the design rather than the implementation of user interfaces. Similarly, the main thing here is the design is user centered. That means यहाँ पर डिजाइन जो होता है वो इस वे में क्रिएट किया जाता है कि यूजर को अट्रैक्ट करे, यूजर के लिए हेल्पफुल हो,
Then the next point here is UI design always involves the development of prototype interfaces. That means यहाँ पर सबसे पहले एक prototype create किया जाता है so as to test the usability of a design. Now you can see here the user interface design process. First of all, we have to analyze and understand user activities. After the analyzation phase, produce paper-based design prototype. That means here a prototype is created, then a design prototype. Then the next phase after designing a prototype is produce dynamic design prototype. After creating a dynamic design prototype, you have to execute that prototype. That means you have to use that particular application. After using the application, if it is final, then you have to implement it, and if it is not final, then you have to evaluate it using the end users, and this process goes on simultaneously until the objective is attained. Now let us discuss the UI design principle. So UI design must take account of the needs, experience and capabilities of the system users. जो भी UI डिज़ाइन होते हैं वो कस्टमर की नीड्स को, एक्सपीरियंसेस को, कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसे अकाउंट में कंसीडर करते हैं so as to help the users properly, so as to satisfy the users properly. Now the next thing here is designers should be aware of people's physical and mental limitations. जो भी डिजाइनर्स हैं उन्हें ये कंसीडर करना चाहिए कि यूजर किस टाइप का है, what is the level of his mentality, then mental limitations को भी उन्हें कंसीडर करना चाहिए. And the last one here is they must also be aware of the physical capabilities of a person. Then the next point here is UI design principles underlying interface designs, although not all principles are applicable to all designs. हर एक डिजाइन के लिए एक प्रिंसिपल अप्लाई किया जाना चाहिए, whereas you can say the same principle cannot work in all designs. So you have to create separate principles for separate designs. Now here is an activity for you. You can try out these questions. So here the first one is explain user interface design process. Now the next question here is give examples of pointing devices. So this is the end of today's session. Thank you and have a nice day.